ভালো লাগে না।
Genelde çarpılma geldi. Kulağını kullanmak. Valideyle geldim üzerine. Ha? Valideyle. Valideyle geldim.
Hi all, good evening. Let's start now. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, in our previous class, we discussed about different clauses we have in SQL. Which all clauses we saw till now? Let's just revise all of the clauses we have seen till now and then we will move ahead, okay? So, what all clauses we have seen? Check, Sorry, check, I didn't get you. Order by distinct, where, limit. Hmm. तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज हमने सीखा दैट इज योर वेयर क्लॉज ओके देन वी सॉ डू आई नीड टू राइट द यूसेज ऑफ दीज क्लॉजेस अगेन No, ma'am. नो राइट ठीक है दिमाग आ तो जाता हमने है। देखा वेयर क्लॉज ऑर्डर बाय क्लॉज देन वी सॉ दिस डिस्टिंक्ट लिमिट व्हाट एल्स having, हाँ उससे पहले ग्रुप बाय देन वी सॉ दिस हैविंग क्लॉज union and union all. यूनियन एंड यूनियन okay so these all are the clauses we have seen till now so इसमें से सबसे important है आपका like all are important equally important I would say but group by I believe is little many people gets confused with the group by clause तो group by clause क्या करता है वो सिर्फ हम एक बार repeat करेंगे it just groups the data based on similar values and when we say this इसका मतलब है जो भी आपकी पूरी टेबल है उस टेबल में जो भी डेटा है उसे अगर आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है सो इफ आई हैव टू क्रिएट द ग्रुप आई नीड टू हैव सम क्राइटेरिया कि किस बेसिस पे आई नीड टू क्रिएट दोज ग्रुप्स वो क्राइटेरिया वो कॉलम नेम विल बी देयर इन योर ग्रुप बाय क्लॉज सो व्हाट इट विल डू इज it will just divide the data into multiple groups based on it. Okay, so we saw an example wherein we calculated, we have this employee table here and we tried to calculate count of employees from each of the departments we have. If we have to get minimum and maximum salary from each department here, what will be our query? Select में आपका क्या आएगा? Minimum of salary, comma max of salary from employee. What will be there in the group by clause? Group by department. Okay. So this query also will give you mean and max salary of each of the departments you have. This also works. Yeah, if you want, you can add this department name value, the group value in the select clause to understand which is the minimum and maximum salary for which of the departments we have. Okay, we cannot add any other column apart from the group value here in the select in this case. Aggregate functions आप use कर रहे हो सिर्फ aggregate functions use कर रहे हो you are not using group by तो you are not allowed to select any other column apart from those aggregate values. Group by अगर आपकी query में है तो only the group value या फिर we can say जो column आपकी group by clause में use हुआ है वही column आप यहाँ पे select में add कर सकते हो. Let's try to write a small query, one more small query. So this is the cells table I have. पापा जी क्लास चालू है, थोड़ा So सा किसी आराम से। art gallery का cells table है wherein we have all this information. We have the cell ID, then we have the painting ID,
जिस आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग बनाया उसका आईडी, किसने कलेक्ट किया, किसने खरीदा, and what was its sales price. And now what I want to calculate is total sales and number of paintings an artist have done. हर एक आर्टिस्ट ने कितने पेंटिंग्स सेल किए एंड व्हाट इज हिज टोटल सेल अमाउंट, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो हमारा क्वेरी क्या होगा इसके लिए? What all things we will have in the select clause? Sum Sum of sum sale of price. sales price. Okay, so what we will need to have is count of painting ID or count of star also you can give. So painting ID, this will give you the number of paintings an artist have sold. Next क्या होगा आपका? Sum of sales price. From this sales table, what will be the column in your group by clause? Artist ID. Artist ID. So this will help you give the required output कि इस आर्टिस्ट ने 2 पेंटिंग सेल किए हैं and he have earned 4,800 rupees. This artist whose ID is 1, he have sold 1 painting and his total sales is 300, like that. Okay, so this way you can make use of this group by clause and aggregate functions to calculate such values. Okay, so that was all about the group by clause we have. Next thing we need to discuss here is the different types of joins we have in SQL, which is the very important thing as as far as your SQL knowledge is considered, as well as your data gathering phase is considered. Okay, as we have already discussed, data gathering में हमें multiple tables को join करना पड़ सकता है, and that is why it is necessary to understand the relation between tables, and it is important to know about different types of joins in SQL. So what is the basic use of join we have? That is to combine data from multiple database tables. What happens when we perform this union and union all operation is we are just appending the rows to the output. But here, what is our requirement is if employee's personal information is stored in one table, that is his employee ID and employee name, he is working on this particular project ID 10, and now I want to get the name of this project which is stored in some other table. So we need to see what kind of relationship we have between those two tables and how we can get the project name related to this employee from the project table. So these this is there in your one table and this is there in your another table. But in our output, we want to see all these 4 values in a single row, and that's where we will have to make use of these joins. So there are multiple types of joins we have in SQL, and the very first type of join is your inner join. So what exactly inner join does is it returns you only the common records between the tables we are joining. Okay. So if you see the Venn diagram for inner join operation, this is your table 1, this is your table 2, and what will be the output is only the common records between both of them. So for example, if this is your employee table and this is your department table, and let's say we are joining both of them using employee IDs. So the common column we have between these two tables is your employee ID. So what this inner join will return is only the employee IDs which are there in your employee table
as well as there in your department table. And then r- you can have all the information uh, related to these employee IDs only. So when I say all the information, इन employee ID से related जो भी personal information है आपके employee table में save, जैसे उनका ID, name, salary, location, whatever is the information you have in your employee data table, we can fetch that. और उन्हीं एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड डिपार्टमेंट टेबल में जो भी डेटा सेव है, डिपार्टमेंट नेम हो गया, उस कौन सा प्रोजेक्ट है, वट एवर, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, जो भी डेटा आपके डिपार्टमेंट टेबल में सेव है, उन एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड वी विल बी एबल टू गेट दैट information. But inner join will only give you the common employee IDs. This is nothing but the intersection of sets, you can say. Even the Venn diagram is same. ओके, इंटरसेक्शन के केस में रिलेटेड डेटा ऐसी कोई बात नहीं होती है, वी जस्ट गेट द कॉमन एंटिटीज. बट यहाँ पे यू विल बी एबल टू रीड दोज कॉमन एम्प्लॉय आईडीज इन द आउटपुट, और उन एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड आप एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल से डेटा रीड कर पाओगे. दैट इज योर इनर जॉइन ऑपरेशन. नाउ let's try to understand it with an example. Okay, so this is the very basic example we need to understand to get the joins concept very clear. Okay, we will understand how exactly that happens at the database level. So this is your table 1 and this is your table 2, wherein in this table 1 we just have one column और ये सारी उसकी values हैं, and this is the table 2 with only one column, again column 2, and these are the values in it. Okay, and now I want to perform inner join operation between this table 1 and table 2. Now what is, how exactly joins take place is, how do we write a normal where condition is, we write something like this: salary is equals to 4,000, department is equals to something, admin. Okay, so here when you are writing a where condition, what we are doing is we are just comparing a column with its own values. But when you do perform, or if you want to implement the join operation, if you want to read data from multiple tables, what we need to compare is a column from one table with the column of another table. That's what is your joining operation. Comparison will happen. Now how it will happen? So you can simply relate this with the execution of your nested for loop. तो यहाँ पे okay, can you tell me what all common values are there between column 1 and column 2? A, A and D. A, And B. and A, D. B, D. B is also there. B also. A, B, and B and D. correct. So these three are the common values we have between column 1 and column 2. Now what you did to find out that these values are common? You just compared all them, right? And that's what database also does. जब भी हम join query लिखेंगे तो होता क्या है database level पे is, you take this one value, if your joining condition says column 1 is equals to column 2, take this one value, compare it with all the values you have in your column 2, and wherever this condition will return true, you will have a row in the out. Okay, so जब भी ये comparison true return करेगा, whenever you will find a match for this value, a row will be returned in the output. So if that's the case, and I am comparing this A with all the values of column 2, how many times that condition will return true? 3 times. A, B, in the case of A, B, name.
नहीं, ओनली अभी के लिए सिर्फ पहली वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ इस ए को इन सारी वैल्यू के साथ आप कंपेयर करोगे तो कितनी बार वो ट्रू रिटर्न करेगा? Two Two times. times. Two times. You will have 2 rows in the output for this value. Okay, and as we are just reading column 1, you will have single column in the output. Again, number of rows आपके डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो and what all values you have in the columns, but the number of columns still depends on your select clause. So if you just have this column 1 in the select, you will have only one column in the output also, but we will understand how many rows we will get. ठीक है, तो a को कंपेयर किया हमने, that condition returned true twice and that's why we got these 2 rows in the output. अभी a को फिर से इन सबके साथ कंपेयर करोगे तो that condition will not return true in this case. Okay, so we are done with the comparison of this first value. Now let's go to this second value, that's again a. तो अभी इसको अगर इन सबके साथ कंपेयर करेंगे तो भी कितनी बार मैच मिलेगा? फिर से Two times. 2 times. So it will also return 2 rows in the output, and that means whenever you have duplicate values in a column of your joining condition, जो भी कॉलम को यूज करके आप टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो उसमें अगर डुप्लीकेट्स हैं, that produces a Cartesian product. So when I say Cartesian product, if you observe 2 into 2, how many rows we have got in the output? 4 rows. यहाँ पे अगर एक और बार a होता तो how many rows we would have got in the output? 2 into 3, 6 rows for just single value. So if you can understand this comparison, it will be easier for you. एक वैल्यू यहाँ से लेनी है, सबके साथ कंपेयर करना है, जितनी बार वो मैच होगा, जितनी बार वो ट्रू रिटर्न करेगा, you will have a row in the output. Okay, but in case of duplicate values, it returns a Cartesian product. That means 2 into 2 4, 2 into 3 6, like that. So if you have got 4 A's here and 4 A's here, how many rows would have been there in the output of inner join operation? 16. Okay, 4 into 4, 16 rows for a single value, that is a. Okay, that's how your join works. Now we are done with the comparison of these two. Let's compare this b with all of these values. How many times it will get a match? One time. Only once. So it will return a row in the output, a single row in the output. Now C को कंपेयर करेंगे तो वो कंडीशन कभी भी ट्रू रिटर्न करेगा क्या? No. C को कंपेयर करेंगे तो it won't get its match here because we do not have C in your column 2. तो आपके इनर जॉइन के आउटपुट में C आएगा क्या? It won't be there. ओके, क्योंकि इनर जॉइन सिर्फ और सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है, तो सिर्फ अगर इसका मैच मिलेगा तो ही यहाँ पे एक रो आपकी ऐड होगी. As we do not have a match for C, it won't be there in the output of inner join operation in this case. Next value we have is this null. मतलब मैम ये रो पर काम करता है, इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन किस पे काम करता है? रोज पर, मतलब रोज के डाटा पर, डिपेंड्स ऑन रोज. रोज, या यस. रोज एज इन जो भी आपका ज्वाइनिंग कंडीशन है, राइट? अभी तक हमने डिस्कस किया जितनी बार भी वी डिस्कस्ड कि दो कॉलम, दो टेबल्स को रिलेट करने के लिए वी नीड टू हैव सम कॉमन कॉलम, करेक्ट? यस. तो हमने क्या किया, वी डिस्कस्ड कि एम्प्लॉय टेबल में अगर प्रोजेक्ट आईडी है, उस प्रोजेक्ट आईडी से रिलेटेड प्रोजेक्ट का नाम लेने के लिए वी वेंट टू द प्रोजेक्ट टेबल और उससे रिलेटेड डेटा हमने वहां से रीड किया. सो हाउ डिड वी एक्चुअली ज्वाइन दोस टू टेबल्स यूजिंग प्रोजेक्ट आईडी,
correct? So project ID of employee table, when it was equals to the project ID of project table, then only it returned a row. Then only we could actually get the project name of that particular employee, right? तो वैल्यूज आपकी कंपेयर होती हैं, जो भी ज्वाइन कंडीशन है उस कॉलम की वैल्यूज कंपेयर होती हैं, एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग ज्वाइन टाइप्स में यू विल गेट डिफरेंट नंबर ऑफ रोज. ओके, so the next value we have here is this null, and it won't be there in the output of inner join ever, because we cannot compare null with any other value. Even if you have had null in table 2, फिर भी you cannot say that this null is equivalent to this null. Okay, it will never be the case, and that is why inner join के आउटपुट में कभी भी कोई भी null रिकॉर्ड नहीं होगा. Okay, so these two values will not be there in the output of inner join, but दोनों का reason little different है. C का मैच नहीं मिला इसलिए that's not there. null का मैच नहीं हो सकता है इसीलिए it won't be there in the output of inner join here. Okay, and lastly we have this D, जिसके लिए भी how many times we will get a match? Only Single time. नहीं, only we have one D here, column 2. Okay, so that's how your inner join works. Okay, simple. Compare common records ही हमने निकाले हैं, but it is little different in this case, just in this case. Okay, so whenever you have some duplicate values, it will return you the Cartesian product. That means it will return you the number of rows equivalent to the Cartesian product of these values. These number of rows actually 2 into 2, 4. Okay, now if I'll change my select to have column 2 both, what will be the change in the output here? Will it affect the number of rows we have got? No, ma'am. Yes. नहीं. सिलेक्ट चेंज करते हैं तो मैंने बहुत बार रिपीट किया है, सिलेक्ट चेंज करते हैं तो कभी भी नंबर ऑफ रोज आपकी अफेक्ट नहीं होंगी. इफ यू आर रीडिंग डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल्स, सिलेक्ट ओनली डिसाइड्स की how many number of columns. all columns we are going to have in the output. Okay, number of rows, सिंगल टेबल से डेटा रीड कर रहे हो तो आपकी वेयर कंडीशन पे डिपेंड करता है. इफ यू हैव एडेड लिमिट क्लॉज उस पे डिपेंड करता है. इवन इन केस ऑफ जॉइंस it depends on the number of rows are dependent on the values you have in the joining condition wala column, the type of join you are performing, and also a where condition if you will add any. Okay, तो इन सारी चीजों से आपकी नंबर ऑफ रोज अफेक्ट होंगी, बट सिलेक्ट से सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी अफेक्ट होंगे. सो इफ आई जस्ट चेंज माय सिलेक्ट टू हैव column 1 and column 2 both in this case, you will be able to see an output like this. number of rows change नहीं होंगी आपकी. comparison will happen in same way again. सिर्फ और सिर्फ आप रीड करते टाइम दो कॉलम्स को रीड करेंगे. ओके, now let's try and write a query for this. सिंगल टेबल से जब हमें डेटा रीड करना था तो what we wrote is this simple query, select star from table 1, whatever is the table name. अभी हमें क्या करना है, इस टेबल को we need to join this table with table 2, and the syntax for that would be table 1. Here you need to mention which type of join you need to perform. This is your table 2. So here I want to perform an inner join between table 1 and table 2. And to perform that inner join, what is my join condition? What's my criteria to join these two tables? That we have to mention here with the help of this on clause. I want to join
I want to perform an inner join between table 1 and table 2 on the basis of table 1 का column 1 is equals to table 2 का column 2. So which columns we are actually comparing to perform this join operation? Column 1 को हमने column 2 के साथ compare किया, right? And as we have given star over here, we will be able to read all the columns from table 1 as well as all the columns from table 2. That means in this case, we will have column 1 and column 2 both in the output of this query. Can you see? Whatever we have calculated here, that's what we have got. Okay? There are 4 rows for A, then we have got D, and then we have got this B. And as we have written star in our select statement, or आपकी base table. So whatever table is there in your from clause, that can be referred as base table. So अगर आप सिलेक्ट में सिर्फ स्टार लिखते हैं तो टेबल 1 की सारी कॉलम्स पहले दिखेंगी, देन टेबल 2 की सारी कॉलम्स दिखेंगी. लाइकवाइज व्हाटएवर टेबल्स यू कीप एडिंग, अकॉर्डिंगली वो कॉलम्स ऐड होते जाएंगे. नाउ व्हाट इफ आई say column 2 comma column 1. What did I do? I just changed the sequence of column I am having in my output. पहले column 1 पहले display हो रहा था. Now the column 2 is there as the first column of the output. So necessary नहीं है कि जो आपकी बेस टेबल है या फिर जो पहली टेबल है उसी के कॉलम्स पहले रीड करना है, एंड देन यू कैन we do not need to follow that sequence. You can just have any column in the output in any sequence from any of the tables being joined. Okay, so star लिखते हैं तो it will give you all the columns from all the tables being joined, या फिर you can choose specific columns from the tables being joined. So if you just want to have single column in the output, you can just say select column 1. So number of rows आपकी change नहीं होंगी. It is still performing an inner join operation, but जब आप output read कर रहे हो, you are reading only the column 1 values. Okay, so that's your inner join operation. And if I have to perform that inner join on this student and course table, इन दो tables पे perform करना है. So basically I want to get the information of students which are common between the student and course table. Okay, and I want to have all of these columns in my output. तो मुझे क्या चाहिए? I want to read student roll number, course roll number, उस student का नाम, वो कौन सा course कर रहा है, and his or her address. This all information I want to get in my output. Okay, can you tell me which all common records we have between the student and course, and how exactly will you join these two tables? First of all, किस कॉलम को यूज कर सकते हैं हम इन दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए? रोल नंबर. Roll number. Use this roll number field. Okay, and now which all common roll numbers are there between them? 101, 1 and 2. 102. 101 and 102. Okay, only these two are there which are present in both of the tables. तो आपके inner join के output में भी सिर्फ दो records आएंगे. Now here we have got just 2 because we do not have data like this. There are no duplicates. There is no one-to-many relationship. There is just 1-to-1, wherein this is our student. Her name is Snehal. She is from Pune and she is doing a data science course here. That's it. Okay. So if you go and read course के roll numbers, तो भी values आपकी क्या होंगी? 101 and 102. 102.
It will be same, and that is why we have got this row in the output, because student roll number is equals to course roll number. What will be the student names for these two? Snehal and Sneha. Snehal. Okay, these two rows, Snehal and Sneha. 101 का नाम है स्नेहल, 2 का नाम है स्नेहा. What will be the course name for both of them? Data science. Data science. Data science and data science. And what will be the address? That is your Pune and Mumbai. Mumbai. Okay, so in this way we are able to get the whole information for this particular student. You can say her roll number is 101, her name is this, she's doing this course and she's from Pune. Like that for all the students जिनका data अभी इन दोनों ही tables में available है. Okay, now let's try and write a query for this student and course table. Let's start from. So we have the student table, as you all are already aware of, and this is our course table. Okay, so the query will be, let's just have star first of all in our select and say select star from student. Which type of join we need to perform? Inner join, your course table, and what is our joining condition is student dot roll number. It should be equals to course dot Course roll. dot roll. So if you'll execute this, what all data we are able to read? See, these three columns are from your student table, roll number, student name and address. And next three columns are from your course table, course ID, course name and roll number. Now if you have to choose specific columns of these tables, as we may have to, because we discussed that जब आप important 5 tables choose करते हो out of like different tables client have shared with you, उन 5 tables में से you will have to choose specific columns. So उसके लिए क्या करना पड़ेगा? We just need to replace this select. So in our case, which all columns we want to have? दोनों table की roll number values, student name, course name and address. Okay, so let's just have this student name, course name and this address field first. Okay, so we will have only these three columns in the output. Now when you try to get the roll number of these students, we will just add this roll number field in our select and run this query. We have got an error. What it says, column roll number in field list is ambiguous. What is the meaning of ambiguity? मतलब उसको समझ में रोल नहीं नंबर आया कि कौन रोल सा नंबर टेबल दोनों में से है लेना मैडम, है. रोल Correct. नंबर. Correct. From which table it has to take. Correct. Okay, ambiguity matlab confusion you can say, because this roll number field is there in both of these tables. We know that we are performing an inner join operation, और दोनों की values आप पढ़ने जाओगे तो those are going to remain same. But while reading that particular column value, while having that column in your select, you need to tell the database system कि आपको output में exactly कौन से table की roll number value चाहिए. And to do that, what we need to do is just add the table name along with the column name here. So you can have these table name with these columns also. इन columns के साथ भी आप table name add कर सकते हो, but वहां पे जरूरत नहीं है, because database already knows कि student name जो है वो आपकी student table में है and course name is there in your course table, so there is no confusion. But in case of roll number value, roll number column, there is a confusion because that particular column is there in both of the tables. And that's where it becomes mandatory to specify a table name along with the column name. अभी आप course dot roll number करेंगे तो भी the values are going to remain same in case of inner join.
but you have to give a table name along with the column name. Okay. Now if you go and say student dot course name, it will throw you an error key, unknown column, course name in field list. Why? Because this course name is there in your course table, but आप क्या बोल रहे हो, स्टूडेंट से मुझे ये डेटा रीड करना है, which is not there. So you will get an unknown column वाला error. Okay. Now second important thing, not necessarily कि आपको ambiguity error सिर्फ ऐसे कॉलम के लिए आएगा जो कॉलम आपने ज्वाइन कंडीशन में यूज किया है. In this case, that's the scenario. But even if you have any other column which is common between both of these tables, जिनका नाम इन दो tables में same है, you need to have that column in the output, you need to specify a table name along with it. It will also give you an ambiguity error. जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपकी ज्वाइनिंग कंडीशन वाला ही कॉलम हो, और भी कुछ कॉलम हो सकते हैं जो दो टेबल्स में कॉमन है, जिनका नाम सेम है. उन्हें भी एक्सेस करने के लिए आपको डेटाबेस को बताना पड़ेगा कि कौन सी टेबल का वो कॉलम आप यहाँ पे रीड करना चाहते हो. ठीक है. सो दैट्स हाउ योर inner join works. You will just get the common records and you will be able to get the related information of these roll number values, of these common values you have between two tables you have joined. Everyone clear with the inner join operation? सबको inner join समझ में आया कि comparison कैसे होता है, how it returns common records? Because if you have understood this comparison, then only you will be able to understand this left, right and other joins. मैम वो आपने बताया था ना कि कॉलम वन, जैसे ऊपर के एग्जांपल में कॉलम वन में ए 2 बार है, कॉलम 2 में भी ए 2 बार है, तो वो फाइनल आउटपुट में 4 बार आ गया. जैसे अभी यहाँ पे भी हमने रोल नंबर 101 102 स्टूडेंट रोल नंबर कॉलम में भी 2 बार है, और यहाँ पे भी No, it's अच्छा not एक there, बार ना हाँ, एक ही बार है एक बार. इसीलिए. So you can, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना फिर कि हाँ, जो भी हम कॉमन कॉलम देख रहे हैं वो वो रिपीट में है. एग्जाम्पल सिर्फ पर्पसफुली क्रिएट किया गया है ताकि we should know what happens when you have duplicates in the column. Okay, so this is possible. One to many relationship is possible. You can have this, but this is the very rare case. Can you imagine having like 25k duplicates here and 25k duplicates here also? How many records this comparison will return? 25k into 25k, right? Which will be a very huge data set, which is unnecessary. तो इसके ऊपर पहले अगर ऐसा कुछ होगा तो जैसे हम ईडीए परफॉर्म करते हैं वैसे कुछ करना पड़ेगा क्या अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू है? You may have to remove the duplicate values, but again, if you have data something like this, that can be a source issue. Okay, so there is a whole lot of process before your data comes into a database table. Okay, you may have a data warehouse, पूरा ETL process होता है, तो it won't be this scenario ever. But अगर है तो you may have to backtrace it कि आपको ऐसा डेटा क्यों मिल रहा है. You need to see the actual issue and then probably you can solve it. Okay, but this is just to make you understand कि अगर duplicates हैं तो you will be getting a result like this, and this is also called as a cross join operation in database. Okay. Cross join will simply return you the Cartesian product of the number of rows you have. मैम मतलब अगर मतलब है वो कि वो 101 हार्डली पॉसिबल होगा कि ऐसा डेटा आ सकता है.
yes, yes, yes. ऐसा डेटा नहीं होगा कभी, because you know you will get a very unnecessary huge result set if you have data like this. We won't be joining on such columns in an actual scenario. Okay. Okay. Yeah. Someone was saying something. कोई और कुछ मैम बोल रहा था, right? हाँ मैम, अगर मतलब वो 101 की वैल्यू अगर जावा के लिए भी होती तो वो 2 बार आता ना आउटपुट में। That is fine, no? Because see, that's your one to many relationship, na? That's a valid relationship. हाँ But मतलब ये वही, वाले मतलब वो आपने ए का बताया था ना, वैसे वैसे टाइप में हो जाता ना वो, ये आउटपुट। not exactly. ए वाले केस में कहाँ गया? Not in a exact similar manner हम बोल सकते हैं. This is just redundant data, you can say. एक ही एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स है. Your data won't be like that. Your data will be like this, however we have in the student table. You may have this. हाँ Okay, that is your one to many relationship. Okay, हाँ ओके। so this is your inner join operation, and we also saw how to write this join query. Now let's try and understand the next type of join we have, which is your left join. Okay. Now what exactly left join is? Inner join plus remaining records, or we can say remaining values from left table. So when I say this and you are doing A left join B, here A is the left table and B is the right table, and your table left table gets the priority. That means you will get everything. Okay, तो इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो, इनर ज्वाइन प्लस रिमेनिंग वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. जिनके लिए मैच है उनके लिए आपको राइट टेबल की वैल्यूज मिलेंगी, राइट टेबल से डेटा मिलेगा. बट जिनका मैच नहीं है, डेटाबेस विल पॉपुलेट null for them. So if you go and check the Venn diagram for left join, it says we are getting everything from left table, but you will get, okay, so if this is your employee table and this is your department table, so you will get inner join, that is common employee IDs between them, along with all the extra employee IDs which are only there in your employee table. ऐसे एम्प्लॉय आईडीज जो दोनों में कॉमन है वो तो आएंगे ही, विच इज योर इनर जॉइन ऑपरेशन. इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा के एम्प्लॉय आईडीज हैं जो सिर्फ एम्प्लॉय टेबल में है, जो सिर्फ आपके लेफ्ट टेबल में है, ऑल दोज एम्प्लॉय आईडीज विल आल्सो बी देयर इन द आउटपुट ऑफ योर लेफ्ट जॉइन क्वेरी. अभी अगर ये वाले एम्प्लॉय आईडीज आपके आउटपुट में आए हैं, इन एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड आप डिपार्टमेंट लेवल इंफॉर्मेशन रीड करने जाओगे तो डू वी हैव दैट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट टेबल? इन एम्प्लॉय आईडीज का डेटा डिपार्टमेंट टेबल पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? इन एम्प्लॉय आईडीज के लिए आप अगर डिपार्टमेंट नेम रीड करने जाओगे, यू विल गेट नल ओवर देयर. अगर एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट टेबल का रीड करने जाओगे, इसके करस्पॉन्डिंग दैट विल आल्सो बी नल, and all the values, all the columns for these employee IDs for these rows from your department table will return null. Okay, so in simple words, if I have to say, we can say either of these. First is inner join plus remaining from left table. रिमेनिंग के लिए मैच नहीं मिलेगा तो आपकी टेबल 2 से नल पॉपुलेट होगा. Otherwise, we can say we will get everything from this left table. For the matching records, दोनों टेबल का डेटा आप रीड कर पाओगे. For this unmatched records, we will just have the
employee related information, we won't be able to get the department level information because that is not available. Okay, now if that is your left join and we need to perform that left join operation on these two tables again, your table 1 and table 2. ओके, तो इन दो टेबल्स पे लेफ्ट जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे. कैन यू हेल्प मी राइट एन आउटपुट हियर? What will be the output of left join in this case? So what is your left join? It is just inner join plus remaining from left table. Simple. Simple सा definition है इसका. That is inner join plus remaining from left table. So if that's the case and I want to read column 1 and column 2 both in my output, can I straight away copy this and paste it in case of left join also? That's your inner join output. बट अभी इनके अलावा कौन सी रोज आएंगी लेफ्ट जॉइन के आउटपुट में? C and null. C and null. And null. Okay, because those are there in your left table. If you see, we are getting everything, basically we are getting everything from your left table. जिनके लिए मैच है मैचिंग रिकॉर्ड, बट जिनके लिए मैच नहीं है उनके लिए डेटाबेस क्या पॉपुलेट करेगा? इट विल पॉपुलेट. Okay, so this null is because its equivalent value is not available. This doesn't mean कि null is equals to null. Okay, equivalent value नहीं है इसलिए database populated null. वैसे ही C के भी equivalent कोई value नहीं है आपकी column 2 में, इसलिए database populated null here in this case. Okay, same चीज के लिए अगर हमें query लिखना है तो we will have to use this same query. Your syntax will remain same. Self, the thing we need to change here is the type of join we are performing. Inner की जगह आप करोगे left join. Okay. Now if you'll execute this query, we have got everything. C के corresponding null, null के corresponding also null. अभी इस केस में भी अगर आप कॉलम की सीक्वेंस को चेंज कर दोगे तो कॉलम 2 को अगर आप पहले रीड करोगे तो नल पहले दिखेगा. null and C, null and null. Okay, that doesn't change anything. Your left join operation remains same. जैसे हमने कैलकुलेट किया वैसे ही रहेगा. We are just changing the sequence of columns when we are getting them, when we are reading them in the output here. तो लेफ्ट ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? इनर ज्वाइन एज इज वी कैन हैव, और उनके अलावा जो भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स हैं आपकी लेफ्ट टेबल में, ऑल ऑफ दोज विल बी देयर इन द आउटपुट. नाउ व्हेन टू यूज दिस लेफ्ट ज्वाइन इज in this case, in this student and course table case, if I say I want to have all students of this class in the output and also want to read their course level information if it is available. Okay, अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, सारे स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन आई वांट टू हैव फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो कौन सा कोर्स करेंगे और उनका डेटा इस कोर्स टेबल में अवेलेबल है, तो आई वांट टू रीड दैट course related information also. नहीं है तो भी it's fine, but I want to have that those students in my output. So which type of join we will have to perform is your left join operation between student and course table. Okay, so student और course में फिर से left join perform करना है and joining condition, your joining condition will remain same. रोल नंबर के बेसिस पे ही आपको इसे ज्वाइन करना है. सो विच ऑल वैल्यूज विल बी देयर
इन दिस पर्टिकुलर कॉलम स्टूडेंट रोल नंबर में कौन सी वैल्यूज आएंगी? 101, 102, 103, 104, 105. सारे ऑफ योर लेफ्ट टेबल. Okay. Now what all values you will get from the course table? 101 and 102. 101 and 102. ये तीनों रोल नंबर्स जो है वो आपकी कोर्स टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या पॉपुलेट होगा? Null. Populate null. Null. Okay. If you go and try to get the student names, which all values will be there in this column? All snails, सारे Nikita, नाम आए. All 5. ओके, बिकॉज ये सारे रोल नंबर्स, ये सारे स्टूडेंट का डेटा आपकी स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल है. What will be the value we'll have in course name column? data science, data science. सिर्फ ये दो. इन तीनों रिकॉर्ड्स के लिए कोर्स नेम विल आल्सो बी एंड एड्रेस रीड करेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगे? All. Okay, so that's how your left join works. And now if you observe how many rows we have got in the output of left join query? 5 rows, which is 5. equivalent to the number of rows we have in your left table. Okay, so this is also can be a way you can validate your output कि अगर आपके ज्वाइनिंग कंडीशन वाली कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, दैट्स जस्ट 1-to-1 रिलेशनशिप. Number of rows in the output of your left join operation will always be equals to the number of rows you have in your left table. Okay, if it's a 1-to-1 relationship between two tables you are joining, the number of rows in the output of left join will always be equals to the number of rows we have in your left table. Okay, and that's what happened here also. Now if you go and try to write a query to perform left join operation between these two tables, again your query will remain same. हमें सिर्फ इस inner की जगह क्या करना है? Left join. Okay, this is what we have calculated there. ये तीन रोल नंबर्स आपकी कोर्स टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उनका कोर्स नेम भी अवेलेबल नहीं है. हेलो, लेकिन मैम लेफ्ट टेबल किसको कंसीडर करना है और राइट किसको कंसीडर करना है? हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड ना कि वो आपकी इस पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि मुझे सारे स्टूडेंट्स आउटपुट में चाहिए ही चाहिए थे, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर्ड दिस स्टूडेंट टेबल एज आवर बेस टेबल. ओके ओके, तो हमेशा ओके तो सिलेक्ट के बाद वो सिलेक्ट फ्रॉम के बाद वो बेस टेबल आएगा क्या? हाँ, जैसे हमने जो हमने लिया वो. हाँ, फ्रॉम में जो भी टेबल आप लिखते हो दैट विल बी योर बेस टेबल. अगर आप लेफ्ट जॉइन को फॉर्म करते हो तो इस टेबल की, इस बेस टेबल की सारी रिकॉर्ड्स एंड तक आपके आउटपुट में आएंगी. इफ यू आर परफॉर्मिंग लेफ्ट जॉइन एवरी टाइम, इवन इफ यू आर जॉइन मल्टीपल टेबल्स, सब में लेफ्ट ही जॉइन आपने किया है, तो इस टेबल की सारी रोज एंड तक आपके आउटपुट में होंगी. सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी लेफ्ट मोस्ट या फिर आपकी बेस टेबल क्या होनी चाहिए. आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपकी बेस टेबल क्या होनी चाहिए. ओके, नाउ next type of join we have is your right join, which is exact opposite of your left join operation. And when I say this, उसका मतलब है right join will give you inner join plus remaining values from right table. Okay, so when you are writing A right join B, okay, A is the left table here and B is the right table. But in this case, our right table gets the priority.
you will get everything from your right table and only matching values from your left table. Okay, so if you see the Venn diagram, it says inner join plus remaining from your right table. तो अगर ये एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल है तो यू विल गेट ऑल द कॉमन एम्प्लॉय आईडीज जो दोनों में प्रेजेंट है. इनके अलावा ऐसे एम्प्लॉय आईडीज मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है. उन एम्प्लॉयज की पर्सनल इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है. Those employees are not there in your employee table. तो आपको वो डेटा अभी आपको आप रीड नहीं कर पाओगे. सो इन एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड एनीथिंग यू ट्राई टू रीड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इट विल बी null. Okay, so same cheese if you have to perform on these two tables, column 1, this table 1 and table 2, what will be the output of right join? Again we can straight away copy the output of inner join we have got. इसके अलावा कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे आउटपुट में which are there in only table 2, not there in table 1? F. FNG. FNG. Okay. और इनके करस्पॉन्डिंग आप कॉलम 1 की वैल्यू रीड करने जाओगे तो वो क्या होगी? इट विल बी null. Okay, so that's how your right join works. इसके लिए भी query will remain same. Syntax इनका common रहेगा, आपका join का syntax remains same. हमें बस type of join change करना है. So we have got F के corresponding null and G के corresponding null. So here क्योंकि आप column 2 की value पहले read कर रहे हो, we are able to see it this way. Column 1 पहले read करते तो null F और null G दिखता. सेम ऑपरेशन अगर हम स्टूडेंट और कोर्स पे परफॉर्म करें, यही 5 कॉलम्स रीड करने हैं हमें आउटपुट में. बट अभी व्हाट वी आर डूइंग इज स्टूडेंट राइट जॉइन कोर्स. तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी इन दिस पर्टिकुलर कॉलम? 101 and 1267. हाँ 101 ये चारों. नो स्टूडेंट रोल नंबर रीड करेंगे 101 and 102. 101 and 102. Okay, how many rows will be null? 2 rows. 3 rows. 2. Okay, because how many rows you have got in the course table? How many roll numbers? 4 roll numbers. इनके लिए मैच है तो ये वैल्यूज मिलेंगी. इनके लिए मैच नहीं है तो इट विल बी नल. स्टूडेंट नेम्स रीड करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों नाम आपको मिलेंगे. For these two, you do not have student names available in your student table. Course names की क्या क्या values आएंगी? All. Data science, Java. Okay. और एड्रेस रीड करने जाएंगे तो क्या होगा? 2 पुणे मुंबई and null. Okay. So if you observe, इस केस में भी क्या हुआ? इनर जॉइन का आउटपुट प्लस रिमेनिंग फ्रॉम लेफ्ट टेबल. इस केस में भी क्या होगा? इनर जॉइन का आउटपुट प्लस रिमेनिंग फ्रॉम योर राइट table. Correct. So that's how you can recall. And one more thing to observe, how many records are there in the output? Total 4 records, which is equivalent to the number of rows you have in your right table. तो अगर आपकी 1-to-1 रिलेशनशिप है तो राइट जॉइन के आउटपुट में उतने ही रिकॉर्ड्स आएंगे जितने आपकी राइट टेबल में प्रेजेंट हो. So the number of rows in the output of your right join will always be equivalent to the number of rows we have got in the right table here. Okay. इसके लिए query लिखना है तो just we will just go and change the type of join we are performing here and say right. So we will be able to get the data which we have calculated in an Excel file there. Okay, that's Excuse me, ma'am. yes. मैम कौन से सिचुएशन में
कौन सा जॉइन यूज करना है ये कैसे मतलब पता चलेगा? कौन सा जॉइन कब यूज करना है? हाउ इट इज डिसाइडेड? ओके, फर्स्ट थिंग, अगर कॉमन रिकॉर्ड्स चाहिए तो दैट इज फिक्स कि आप इनर जॉइन परफॉर्म करोगे। ओके, लेफ्ट यस। या फिर राइट, अगर आप ऐसा करते दिस थिंग कोर्स लेफ्ट जॉइन स्टूडेंट, तो भी हमें क्या आउटपुट मिलता? सेम आउटपुट वी वुड हैव गॉट, राइट? यस। Correct, no? Left join. Okay, so if you are doing A left join B, and now you are doing B right join A, what is the meaning of this? सेम ही मीनिंग आएगा। Same meaning, correct? So in this case we need to decide which table should be our base table, and that depends on the amount of data you have in it. ओके, लेफ्ट टेबल तो आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर इस टेबल की सारी ही रिकॉर्ड्स आपको चाहिए आउटपुट में, दैट्स द स्टार्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन। यू कैन से कि स्टूडेंट का डेटाबेस है, सो व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपका स्टूडेंट टेबल। किसी कंपनी का डेटाबेस है तो व्हाट कैन बी द वेरी फर्स्ट बेस टेबल? एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉयर। right? That way, what we can say is on the domain knowledge only we can select what should be our base table, also on the basis of your requirement कि आपकी base table क्या होनी चाहिए। जैसे अभी मेरे प्रोजेक्ट के केस में, so that's a bank project, so our base is the agreement table, so we have got that agreement table in as our base table, or we can say from clause। तो उसके बाद हमने बहुत सारी tables से join करी है, but that depends on the requirement, and there will be a team of data mappers. They will understand, they understands the relation between tables, they understand the business point of view कि टेबल्स को कैसे ज्वाइन करना है, कौन सा टाइप का ज्वाइन आप परफॉर्म करोगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। इन माय केस इट्स ऑलवेज अ लेफ्ट ज्वाइन। I have rarely seen right join being used. Okay, so it's either a left join or an inner join operation. बट अगर आपको राइट जॉइन यूज करना ही है तो आई बिलीव इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव गॉट इन द टेबल्स, सो इट एक्चुअली relates to the performance of the query, nothing else. Either you go with the left join or you go with the right join, and if you have got huge amount of data in the tables, we need to keep a table with less number of records as your right table. Okay, that's actually a data warehouse concept, I believe, कि आपको कम रिकॉर्ड्स वाली टेबल को राइट टेबल रखना है इफ यू आर परफॉर्मिंग लेफ्ट ज्वाइन। अगर राइट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो तो कम you को need- लेफ्ट में हाँ, रखना। हाँ, कम को लेफ्ट में रखना है, वाइस वर्सा टू द लेफ्ट ज्वाइन। Okay, so that's Yes. how we can choose the type of join we need to perform, but again we will be, you guys will be using most of the लेफ्ट ज्वाइन या फिर इनर ज्वाइन आप यूज करोगे। राइट ज्वाइन मैंने भी बहुत रेयरली यूज होते देखा है। Okay. Yeah. So this is your right join, and next type of join we have is this full join, which is nothing but left join union right join. Okay, so in case of other databases we do have a keyword called as full join या फिर full outer join। ये डायरेक्ट कीवर्ड है बाकी के डेटाबेस में, बट टू अचीव द रिजल्ट ऑफ फुल जॉइन इन MySQL, what we need to do is we need to perform union operation between the result of right join and
your left join. ओके तो अभी कल जो हमने यूनियन क्वेरी, नॉट कल, इन आर प्रीवियस क्लास, वट एवर यूनियन क्वेरी वी रोट, there we just had simple select statement. So this result we appended with the result of this simple select query. But अभी हमें क्या करना है, we want to append the result of two join queries. right join के output को left join के output के साथ append करना है using union. अगर आप union all करेंगे तो what will happen? It will simply append the data. It won't remove the duplicates. But if you see the Venn diagram for this full join operation, it says you will get common records along with remaining from left table as well as remaining from right table. But how many times this common is there? Only once. So common values should be there only once in the output, and that's why क्या perform करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? Union. The union will remove all the duplicates. So in this case, in this particular case, all the rows which we have got for A also, वो सारी भी duplicate values remove हो जाएंगी. So to achieve the output of full join, you can simply do this. Just combine the output of left and right join operation, और इसमें से फिर सारे duplicates हम remove कर देंगे. तो ये वाली भी एंट्रीज जो है आपकी ए की सारी डिलीट हो जाएंगी. ऑल द डुप्लीकेट वैल्यूज यू विल जस्ट गेट these four, these two from the output of left join, these two from the output of right join only, and that is your inner join operation. So this will also not be there because that's again a duplicate, and we are performing union between the output of left and right join operation. ठीक है. So if you go and execute this query, we could see A सिर्फ एक बार आया है. Apart from that, we have got this D and B. This F null and G null are from the output of your right join operation. C null and null are from the output of your left join operation. So if you are able to recall this union operation, this is pretty easy. जो भी राइट और लेफ्ट ज्वाइन हमने किया है उस रिजल्ट को हम बस यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं. ओके, नाउ इफ दैट्स द केस एंड स्टूडेंट और कोर्स टेबल में फुल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इफ आई वांट टू नो ऐसी कौन सी रिकॉर्ड्स हैं जो लेफ्ट में है और राइट में नहीं है, और ऐसी कौन सी रिकॉर्ड्स हैं जो राइट में है और लेफ्ट में नहीं है. ओके, so one of the project we are working on right now is, उसमें हमें क्या करना है, we compare data from two different environments. So let's say you have got 100 records in one environment and you have got 120 records in another environment. So the desired output is to have same number of records between these two environments. So what we need to know in this case is, ऐसे सारे records जो मेरी एक environment में है but यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है but यहाँ पे नहीं है. So I need to check both the ways because that is expected. Okay, so that is what in such scenarios you may need to perform a full outer join या फिर full join I would say, ताकि हमें पता चले ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो इसमें हैं इसमें नहीं है और जो इसमें है और इसमें नहीं है. And if that's the case and you perform full join operation on the student and course table, what will be the output? Everything from left and right join का output, but these two records, as these are common between both of them, it will occur, it will be there in the output only once. So this will be the output of your full join operation on student and
force table. ओके, क्वेरी लिखना है तो गो एंड जस्ट हैव दिस यूनियन लेफ्ट जॉइन. ओके, सो यूनियन ऑल करेंगे तो यू ऑब्जर्व 101 एंड 2 इज देयर ट्वाइस इन द आउटपुट. 2 बार आ रहे हैं ये दोनों रिकॉर्ड्स. But क्योंकि we want to have common records only once in the output of full join operation, we will use union and not the union all. Okay, so that is what is the concept of full join. The way you implement this full join in MySQL is little different. हमें union perform करना पड़ेगा, but बाकी के database में like in Teradata we do have a keyword called full join. So we can straight away use the same query and say full join. Okay, but only in case of MySQL you need to perform this union operation to get this done. Understood everyone? फुल जॉइन फिर से एक बार बताइए मैम. Okay, so you understood this union operation. आपको union समझ में आया है? यस मैम. Right join समझ में आया है? यस. Left? यस मैम. हाँ, तो हमने फुल ज्वाइन करने के लिए सिर्फ क्या किया है, इन तीनों को कंबाइन किया है, दैट्स इट. राइट ज्वाइन का जो भी आउटपुट था आपका, दिस इज योर राइट ज्वाइन आउटपुट. ओके, नेक्स्ट इज योर लेफ्ट ज्वाइन आउटपुट. इन दो रिजल्ट्स को हमें बस अपेंड करना है टू गेट द full join done. So if you go and see this Venn diagram, what it says, is this a combination of left and right join? So this is there. Common is there. Okay, this is something which is there in your left join operation. और ये वाला जो part है, this represents your right join. But common कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? Only once. That is why union and not the union all. Okay, तो union क्या करेगा? It will just append the results of both of these queries. Left और right join के आउटपुट को बस अपेंड करेगा एंड whatever duplicate records it will get, it will remove them. सिर्फ इतना ही हम कर रहे हैं. मतलब यूनिक वैल्यूज करेगा वो. हाँ, यूनिक वैल्यूज. जैसे यहाँ पे हुआ था जब हमने नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के आउटपुट को अपेंड किया था. सो इफ यू डू यूनियन ऑल, हाउ मेनी टाइम्स यू आर सीइंग दिस ए? मल्टीपल टाइम्स, राइट? बी भी बहुत बार है, बट जैसे ही आप यूनियन करोगे वी कुड सी ए ओनली वंस. बी भी सिर्फ एक बार आपको दिख रहा है. So it will simply append the data and remove duplicate values. So that is what is happening in this case also. इस एग्जाम्पल को देख के आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा आई बिलीव कि यूनियन ऑल अगर आप कर रहे हो एंड आपको अभी पता है कि 101 एंड 2 आर देयर इन बोथ ऑफ द टेबल्स बीइंग ज्वाइंट, तो ये दो जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपकी लेफ्ट ज्वाइन के आउटपुट में भी थे और राइट ज्वाइन के आउटपुट में भी थे. बट अभी हमें ये दो बार रीड नहीं करना है और उसमें कोई पॉइंट भी नहीं है, राइट? कि अगर आप सेम रो को दो बार रीड कर रहे हो तो इसका कुछ मतलब है क्या? वी आर रीडिंग जस्ट रिडंडेंट डेटा. इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है. ये भी रो देख के हमें वही पता चल रहा है जो ये रो देख के पता चल रहा है. तो ये दो बार रीड करने की जरूरत भी नहीं है एज सच, एंड इसीलिए यूनियन नॉट दी यूनियन ऑल. तो इस क्वेरी से एक्चुअली क्या पता चलेगा कि which all records are there in your left table and not in your right, और ऐसे रिकॉर्ड्स जो सिर्फ आपके राइट में हैं और लेफ्ट में नहीं है. this information, this data you can get with the help of your full outer join query. समझ में आया? हाँ मैम. मैम क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट जॉइन का आउटपुट और उसके नीचे राइट जॉइन का आउटपुट, और उन दोनों में अगर जो भी कुछ कॉमन है तो वो सिंगल टाइम आता है, ऐसे इन हाँ, सिंपल वर्ड्स करेक्ट. करेक्ट.
Okay, that's your full join. मैम बस इनर में नल नहीं इंक्लूड करते ना, बाकी ये दोनों जगह पे नल इज इंक्लूडेड. हाँ, करेक्ट. बिकॉज इनर में नल क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आप नल को किसी भी नल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये वाला कंडीशन आपका कभी भी ट्रू नहीं होगा. करेक्ट. अगर आपके पास जो भी एग्जाम्पल हमने देखा था, इस कॉलम में अगर नल होता भी, इस कॉलम 2 में, फिर भी दिस डजंट हैपन इन डेटाबेसेस. नल इज इक्वल्स टू नल, वो कभी भी नहीं होता. आप एक नल को किसी और नल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं कर सकते. बट इनर जॉइन में आउटपुट देने के लिए क्या चाहिए? दिस शुड रिटर्न ट्रू, राइट? इट विल नेवर रिटर्न ट्रू. इसीलिए आपके इनर जॉइन के केस में कभी भी नल वाला रिकॉर्ड नहीं आएगी. ओके मैम. ओके. बट इन केस ऑफ लेफ्ट जॉइन, क्योंकि ये वाला डेटा आपकी दूसरी वाली टेबल में, राइट टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए सेम गोज विथ दिस रिकॉर्ड आल्सो. ओके. दैट्स द एक्चुअल यूज ऑफ लेफ्ट एंड राइट जॉइंस एक्चुअली, की लेफ्ट टेबल का सारा डेटा मुझे चाहिए ही चाहिए आउटपुट में, इसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन राइट में हो या ना हो. दैट्स व्हाई वी परफॉर्म लेफ्ट या राइट जॉइन. Okay. Now, so these are the basic join types we have in SQL. तो ये कंपैरिजन आप समझने की कोशिश करो. तो ये एक बार अगर समझ में आया, एंड इन इंटरव्यूज, ओके, इंटरव्यूज में यूजुअली यू विल गेट सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स जस्ट टू नो how much you are what we can say sure about the join operations, because this is confusing, right? if you really think student और course में joins perform करना इतना confusing नहीं है जितना यहाँ पे है. अगर आप ऐसे examples solve करें तो try to do it on like such data. ऐसे कोई भी values लेके आप try करो. इस तो गेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑन जॉइंस. इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे मैम? इसके ऊपर यूजुअली, ओके, जैसे आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, बट एसक्यूएल में डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए यूजुअली अभी तक जितना हमने देखा है, यू विल गेट अ असाइनमेंट. एक असाइनमेंट मिलेगी आपको. अगर इनिशियल राउंड है तो बहुत इजी से क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको ग्रुप बाय यूज करना है, वेयर कंडीशन यूज करना है, लाइक यूज करना है, ऑल दीज थिंग्स. ओके. बट अगर लास्ट राउंड आपका एसक्यूएल पे है तो 5 to 6 क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे भी. बट दोज क्वेश्चंस विल इंक्लूड आपका देयर आल्सो इट मे इंक्लूड ग्रुप बाय, जॉइंस और आपका विंडोज फंक्शंस जो हम कल या परसों सीखेंगे. ओके. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर. क्वेश्चंस होंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि आप सॉल्व कर पाओगे यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन टेबल्स, जस्ट टेबल्स का रिलेशन वो बोलेंगे, एंड दे विल आस्क यू टू राइट अ क्वेरी, जो भी एक क्वेश्चन है कि हाँ यू नीड टू गेट दिस एंड दैट इंफॉर्मेशन. तो 4 या 5 टेबल्स होंगे जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, and you need to get the relevant information which is required in that question या फिर in that requirement. Questions like that you will have in the interview. ठीक है. Now till now we saw how to join 2 tables. ठीक है. हमने देखा कि 2 टेबल्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए सिंपल आपको एक सिंटैक्स लिखना है. तो वो सिंटैक्स क्या होगा? सिलेक्ट आइदर स्टार. यहाँ पे स्टार का मतलब है ऑल द टेबल्स बीइंग ज्वाइंड, या फिर कॉलम नेम्स आप लिखें जो भी आपको कॉलम चाहिए आउटपुट में, फ्रॉम योर बेस टेबल. बेस टेबल का मतलब कुछ और नहीं है, दैट विल जस्ट बी अ डेटाबेस टेबल ओनली. बट जो फ्रॉम क्लॉज में होता है उसे आप बेस टेबल बोल सकते हो, इसलिए आई एम राइटिंग बेस टेबल ओवर हियर. योर
type of join, your table 2, and your joining condition. Okay, so this will be the syntax of joining two tables in databases. Now let's understand, if you have more than two tables, how to join them. One second. Okay, so I think we have seen these tables earlier also. तो अभी हमें क्या करना है? This is my requirement. Sorry, this is my requirement that I want to have all of my employees along with their department names, manager names, and the projects they are working on. सारे एम्प्लॉइज चाहिए, उनके डिपार्टमेंट का नाम फेच करना है, मैनेजर का नाम फेच करना है और प्रोजेक्ट का नाम फेच करना है. So what will be your base table in this case again? Employee. Employee table. Employee. Base table होगी. And which all columns we want to have from that table? Employee ID or employee name. So let's try that query one by one. Okay, so employee ID हमें fetch करना है and employee name we want to fetch from this employee table here. One second. EMP underscore ID it is and EMP underscore name. ठीक है, तो ये दो कॉलम्स हमें चाहिए आपकी एम्प्लॉय टेबल से. Now we still want to have all these employees in the output along with, इसके साथ हमें क्या चाहिए? ये एम्प्लॉइज किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं उस डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, और वो किस टेबल में प्रेजेंट है यहाँ पे? दैट्स हियर इन योर डिपार्टमेंट टेबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दो टेबल्स को ज्वाइन, और वो ज्वाइन हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? वी कैन ज्वाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी. ओके, तो if you will perform, okay, and what type of join we will have to perform in this case now? left join. लेफ्ट ज्वाइन पर Left join पड़ेगा ताकि, okay, you can understand it this way. E1 का डिपार्टमेंट D1 उसका नाम IT, E2 का डिपार्टमेंट D1 उसका नाम IT again. This E3 and E4 डिपार्टमेंट they belongs to is D2 जिसका नाम है HR. D10 का डिपार्टमेंट नेम, इसका डेटा इज नॉट अवेलेबल इन योर डिपार्टमेंट टेबल, तो इन दोनों के डिपार्टमेंट का नाम क्या आएगा अभी? नल. Null. Okay, so let's join that department table. We need to perform left join on. Go on mute please. Okay, हमारा ज्वाइनिंग कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू दिस डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी. व्हाट एल्स वी विल हैव टू चेंज इन द क्वेरी नाउ? ये ज्वाइन किस लिए किया हमने इस टेबल को? व्हाई डिड वी ज्वाइंड दिस डिपार्टमेंट टेबल हियर? क्या चाहिए था हमें? हम इसमें मैनेजर भी डिपार्टमेंट नेम. वी वांटेड डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट नेम ना, तो हमें वो कॉलम आपके सिलेक्ट में भी ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी सीइंग एनी डिफरेंस इन द आउटपुट हियर. ओके, तो डिपार्टमेंट नेम इफ यू गो एंड रीड you will be able to get this information. अभी डिपार्टमेंट आईडी को रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी लिखेंगे तो एम्बिग्विटी एरर आएगा. You have to mention the table name along with it. Employee dot department ID अगर आप लिखोगे, so you'll get all these values. If you go and get department के department IDs, so D10 is not there in your department table, that's why null and null.
ओके तो आपको डिपार्टमेंट का नाम मिल गया इन सारे एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इनके मैनेजर का नाम, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मैनेजर टेबल में प्रेजेंट है। नाउ व्हेन यू हैव 3 टेबल्स, जब आपके पास 3 डिफरेंट टेबल्स है टू ज्वाइन, तो देर आर 2 ways to we can have a relationship between them. So you can either have A join B and B join C. वैसे हो सकता है कि आपकी टेबल A B से रिलेटेड हो एंड देन वी हैव यूज सम कॉलम फ्रॉम B टू जॉइन इट विथ C, या फिर हो सकता है A join B and A only is we are using it to join it with C. Okay, so this way also these 3 tables will be related to each other, right? A को ही हम यूज करेंगे टेबल B के साथ ज्वाइन करने के लिए और A को ही आप यूज करोगे टेबल C के साथ भी ज्वाइन करने के लिए। So it depends, it ultimately depends on the data how you have stored it, या फिर उन 2 टेबल्स में रिलेशन कैसा है। So if that's the case and this is the data we have, अभी इन तीनों को हमें ज्वाइन करना है एक साथ। Okay, so what's the correct way to join this manager table with the output we already have? तो अभी मैम जो क्वेरी लिखे है उसको यूनियन करके। नहीं, why you'll do union? अभी हमें क्या चाहिए? ओके, यूनियन कब करोगे आप? रोज को अपेंड करना है तो करोगे। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? E1 है, इसका नाम ये है, ये आपकी D1 डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, सॉरी ठीक है, इसका नाम ये है, he belongs to D1, जिस डिपार्टमेंट का नाम है आपका IT। अभी हमें क्या चाहिए? इसका मैनेजर कौन है? ओके तो वो कहाँ पे रीड करना है हमें? वी वांट टू हैव दैट इंफॉर्मेशन इन द सेम रो, राइट? कि इसका मैनेजर है M1 और उसका नाम क्या है फिर? प्रेम। अगेन दिस इज योर सेकेंड एम्प्लॉय E2 जिसका नाम है मनोज, ही बिलोंग्स टू D1 डिपार्टमेंट। अगेन उस डिपार्टमेंट का नाम है आपका IT, उसका भी मैनेजर कौन है? M1 जिसका नाम फिर से क्या आएगा? प्रेम। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फेच हियर। तो यूनियन से होगा क्या? लेफ्ट ज्वाइन, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। और वो किस कॉलम के बेसिस पे अभी ज्वाइन कर पाएंगे हम? हाउ टेबल्स आर रिलेटेड? नहीं, ओके, डिपार्टमेंट आईडी से ज्वाइन करेंगे तो यू वोंट बी गेटिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन, वी विल सी, ठीक है। So what we will do, we will implement this first thing, A join B and then B join C, and you guys are saying left join आप perform करोगे, left join your manager table and the joining condition would be department dot department ID is equals to manager dot department ID on. Okay. What happened? दो बार आ गए। Correct, we are reading the redundant data because if you see what kind of values you have D1 यहाँ पे 2 बार है, D3 D4 चलो 1 बार है, but D1 is there twice here, so that is returning you such type of data which doesn't make any sense. Okay, so the correct relation between these 3 tables is we will join this employee and department based on department IDs first. उसके बाद इन मैनेजर्स का नाम हमें चाहिए, तो इस मैनेजर टेबल को इस आउटपुट के साथ हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज मैनेजर आईडीज। M1 यहाँ पे जाके देखना है, उसके करस्पॉन्डिंग मैनेजर का नाम फेच करना है। M2
यहाँ पे देखिए उसका नाम क्या है वो पॉपुलेट करना है. M3 you go check here what is his name, that should be there in the output. So the correct way to join this manager with the output we have got is on the basis of employee table का manager ID and manager table का manager ID, and if you go and add this manager name in the select of your query, we are getting the required result here. ओके तो लेफ्ट ज्वाइन आप परफॉर्म कर रहे हो तो भी आपको सारे एम्प्लॉइज मिल रहे हैं along with their manager names. But now if you go and perform inner join here, join किस बेसिस पे आप कर रहे हो? On the basis of this manager ID. What will be the output of left join and inner join in this case? ये आपकी कॉलम 1 है, दिस इज योर कॉलम 2. लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट क्या होगा? दोनों कॉलम्स हम रीड करेंगे और इनर ज्वाइन का आउटपुट क्या होगा? M1 लेफ्ट ज्वाइन में पूरे कॉलम आएंगे लेफ्ट साइड के और कॉमन राइट साइड के कॉलम. ओके वो हो गया थ्योरी, बट एक्चुअल वैल्यूज क्या आएंगे? M1 को आप कंपेयर करोगे एक रो आएगी, फिर से M1 एंड M1 इस M1 के लिए यू विल गेट M2 एंड M2 सेम रो विल बी देयर, और फिर से आपका M3 भी आएगा, विच इज योर लेफ्ट ज्वाइन ऑपरेशन. अभी इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? Will it not be the same? सेम ही आएगा. Same आएगा, right? That okay. It will be exactly same in this case. क्योंकि जैसे आप ओके ट्राई टू कंपेयर इट दिस वे, जो हमने ए बी बी वाला एग्जांपल लिया ना वैसे कंपेयर करोगे तो द आउटपुट ऑफ लेफ्ट एंड इनर जॉइन इन दिस केस विल बी सेम. तो इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन आइदर यूज लेफ्ट जॉइन या फिर इसे इनर जॉइन भी यूज करोगे तो भी यू विल गेट द सेम आउटपुट. ओके एंड दिस ऑल्सो सेज दैट जरूरी नहीं कि आप अगर एक से ज्यादा टेबल्स यूज कर रहे हो तो हमेशा आपको लेफ्ट ज्वाइन ही परफॉर्म करना है या फिर एक ही टाइप का कोई भी ज्वाइन परफॉर्म करना है. यू कैन एनी टाइम कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस अकॉर्डिंग टू योर यूज. ओके सो दैट्स हाउ वी हैव गॉट द मैनेजर नेम्स. लास्टली हमें क्या चाहिए? प्रोजेक्ट नेम. प्रोजेक्ट का नाम. इन एम्प्लॉइज के प्रोजेक्ट का नाम चाहिए. तो इस प्रोजेक्ट टेबल में we have that information stored in this team member ID column, जहां से आपको पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम करता है. So even works on data migration as well as ETL. E2 works on data migration. So only these two employees are here. So again, which type of join we should perform to have all the employees in the output? Still left join, आपका project table. Your joining condition will be employee dot employee ID is equals to project dot team member ID, and you will also add this project name in the select. So we have got, now if you see number of rows अभी हमारे increase हुए क्योंकि this E1 is working on 2 projects, ETL और migration पे भी काम कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट पे हमारी नंबर ऑफ रोज चेंज हुई. ओके दैट इज बिकॉज ऑफ द वन टू मेनी रिलेशनशिप एंड दैट्स हाउ you can join more than 2 tables in databases, and this is what you might have to do to crack an interview on SQL, या फिर अगर आप इन फ्यूचर डेटा गैदरिंग पे कभी काम करोगे तो भी you have to write these types of queries.
Okay. Now, if you observe this query, it looks little lengthy. We have used table names multiple times in a single query, correct? Just so to shorten the length of your query, what we can do is to use the concept of aliasing in SQL. तो alias का मतलब होता है just to give a short name or a nickname, and these aliases can be given to a column, a table, or a subquery. Okay, तो कॉलम को कैसे एलियास देना है, कहाँ पे देना है? ओके, सो इफ यू जस्ट से सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, कॉलम नेम यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है? सैलरी. बट इफ आई हैव टू रीड इट एज सम अदर नेम for this particular instance of query, what I'll do is select salary as sal. Same way how you do it in Python. What do? Import pandas as pd आप लिखते हो, right? What is the meaning of this as pd? Yes, alias SPD. It is an alias for your pandas library. और वो हम क्यों देते हैं? ताकि आप pandas के जो भी functions use कर रहे हो उसके लिए आपको pandas पूरा ना लिखना पड़े. You can just use this pd as the name. Correct? So we are just giving a nickname to this library for that particular instance of your program, of your Jupyter notebook या जो भी. That's what we are doing here as well. सिर्फ और सिर्फ इस क्वेरी के लिए हम इस सैलरी कॉलम को as SAL पढ़ रहे हैं. You can also have some kind of calculations in your select statement. जैसे हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया था, स्टूडेंट का परसेंटेज, वैसे ही अगर मुझे सैलरी वैल्यूज का 25th परसेंटेज कैलकुलेट करना है, what I'll do? Salary into 0.25. What is the column name being displayed? ये जो कैलकुलेशन हमने लिखा है उस वो ही यहाँ पे एज अ कॉलम नेम आ रहे हैं. So you can give any other name to this column also. Now what is the column name displayed here? Per underscore salary. Now if you have observed, you can give these aliases using as keyword या फिर without as keyword भी आप ये aliases दे सकते हो. Okay, both of the ways it works. This is how you can give an alias to a column. You can give an alias to an existing column of your table या फिर उन values को use करके अगर आप कोई calculation कर रहे हो उस column को भी आप कोई नाम दे सकते हो. You can also give an alias to a table name. So this E is an alias of the table here. So for this particular instance of the query, this employee table is treated as its name is E for this particular instance of the query. Okay, तो ऐसे आप tables को भी alias दे सकते हो, but ये जो भी particular query है नीचे वाला उसमें table को alias देने से as such कोई मतलब नहीं बनता है. Okay, but if you use the concept of alias here, it will actually reduce the length of your query a bit. Okay, so let's give an aliases to these tables. Now if you execute this, you will get an unknown column wala error for the very first field. If you will remove this, you will get it for next field, like that it will go. Okay, but why we are getting this error is because for this particular instance of the query, table name is E, not employee. Okay, so database doesn't know about this employee table. Now it just knows E as its name. So if you have to use that table name anywhere in the query, you have to use the alias itself. Okay, तो हर जगह आपको वो aliases use करने पड़ेंगे. डिपार्टमेंट की जगह D, मैनेजर के लिए हमने दिया है M, and this project is P. Okay, so सिर्फ टेबल को एक निकनेम देना है, शॉर्ट नेम देना है, तो वी कैन मेक यूज ऑफ दीज aliases in
SQL also. So we saw how to give an alias to a column, or also we saw how to give an alias to a table. कल वाली class में we will discuss what are subqueries and when it is mandatory to give an how to give an alias to a subquery and when it is mandatory. ठीक है? Anyone have any questions now? Third June only, na? SQL A8. ठीक है? तो हेलो मैडम, आई वांट टू जस्ट डू वन अनाउंसमेंट। खत्म होने के बाद जस्ट एक मिनट हाँ बता हाँ दें। हाँ हो गया मेरा, आप बोल दो। Okay. Guys, for your AWS session, is it possible for you to join 7 to 8:30 for 4 to 5 days? किसी का कुछ रहता है क्या उस टाइम पे? 7 to 8:30। Yes, sir, we can join. अगर किसी का मतलब ऑफिस है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, 7 to 8:30 is fine सर फिलहाल तो ग्रुप में for बहुत AWS कम session लोग only। हैं मीटिंग। सर नेक्स्ट 4 to 60 5 है days। अभी। हाँ, पूरे नहीं, सिर्फ मतलब जब एसक्यूएल खत्म होगा आपका, उसके आगे जब AWS सेशन स्टार्ट होंगे आपके, तो फॉर उस मतलब ओनली फॉर 4 to 5 डेज मैक्सिमम। हाँ, 4-5 डेज पकड़ लेते हैं हम। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके ओके सर। ओके सर, चलेगा। ठीक है। मॅडम, हाँ सर, हा हो उद्या मी फक्त जर का क्लासच्या ना सकाळी लवकर तुम्ही जॉईन झाले ना सगळे मुलं, 8:30 वाजता एकदा हा प्रश्न एकदा मध्ये विचारा फक्त। हो मला चालेल। जमलं तर मी करेल जॉईन, पण नाही जरी मला झालं उद्या जाणं तर एकदा म्हणजे एकदा मेजॉरिटी घ्या फक्त, असतील तर मग मला फक्त नंतर सांगा। हो चालेल। SQL नंतर 4-5 डेज ओके ओके, थँक्यू मॅम। ओके, येस येस, थँक्यू एव्हरीवन। हा AWS च्या एक 5 दिवस तरी कमीत कमी। हा, ओके चालेल, मी विचारते। Okay, chalo then let's stop here for today. Thank you, We'll ma'am. see you tomorrow again at the same time. Thank you everyone. Good night. गुड नाइट मैम। Right. Good night.